Hey class, how are you? Then our today's topic, as you know, I have said in my previous video that we are going to start subject verb agreement. जानते ही हो इससे पहले वाले जो वीडियो हम अपलोड किए थे उससे हम बोल चुके थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है वही होने वाला है कुछ 2 या 3 क्लासेस उसमें लगेगा आई हैव सेड बिफोर सो this is the time to learn. Let's start. Alright, you can see here I have already written subject verb agreement. Then what is subject verb agreement? Subject verb agreement is the grammatical rule that the verb or verbs in a sentence must match the number, person and gender. Number, person and gender of the subject. Alright, I am going to give you the example. See here, look here. The boy are playing and the boys is doing that. So look at that example. That is the boy are playing. क्या लिखा है मैंने? The boy are playing and the boys is doing that. Do you think they both are correct? लगता है ये दोनों सही है? If you are saying no, तो क्यों सही नहीं है? My question is that why it is not correct? Can you please explain? The boy के साथ is होता है या the boys के साथ are होता है. This is called subject verb agreement. ये तो जान ही रहे हो. This is the subject and ये वाला verb हो गया. Then क्यों the boys के साथ are होता है and the boy के साथ is होता है वही आज हम लोग जानने जा रहे हैं. तो चलो let's start. पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं. Then the first rule is you can see number. First one is number. Number that means as you know like he plays cricket. He plays cricket. अगर ये वाला होता है they तो क्या होगा? They play cricket. Alright. ठीक है ऐसे ही अगर ये वाला होता है he is playing यहां पे क्या होना चाहिए? They is playing, they am playing या they are playing. You can see the difference. You can see the difference here. So the first rule is that singular subject. You can see here it is the singular subject and it is the plural subject. So singular subject needs the singular verb. Alright. You can see here he plays cricket or he is playing like he is the singular subject. Singular क्या होता है? ये हो गया एक पेन और ये हो गया तो. Then it is the singular and it is the plural. I have a pen. I have two pens. ये two हो गया ये हो गया plural. So you can see here he plays cricket, he is playing. So he is the singular form of the subject and there is the plural form of the subject. So singular subject needs the singular verb and the another one is plural subject needs the plural verb. Plural verb. So the first rule is that the basic rule that is singular subject needs singular verb and plural subject needs plural verb. Understand? This is the first rule. You can see here he plays cricket, he is playing. तो यहाँ पे he जो है ये क्या है? ये singular subject है. So यहाँ he के साथ मैंने क्या लिखा है? He is playing. Alright. यहाँ पे आप they देख पा रहे हो यहाँ पे they लिखा हुआ है. They are playing that means they क्या है? He वहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है. Suppose a boy is playing there. There is a boy who is playing. तो ए बॉय एक बच्चा दैट मीन सिंगुलर वन वहां पे बहुत सारा बच्चा आ गया बहुत कोई आ गया वहां पे देन क्या होगा दे आर प्लेइंग राहुल इज प्लेइंग राहुल का और दोस्त आ गया 2-4 जन यू कैन सी हियर दिस इज द राहुल ही इज प्लेइंग तो हम क्या बोलेंगे राहुल इज प्लेइंग इसका 2-4 दोस्त और यहाँ पे आ गया लाइक यहाँ पे और 2-4 दोस्त आ गया तो ये क्या होगा they are playing. Understand? So singular subject needs singular verb and plural subject needs plural verb. This is the first rule. Now we are going to write the second rule.
The second rule is regarding person. As you know, there are three types of person. First one is first person, second person, and third person. Understand? So, in the case of first person singular and plural, subject needs a singular verb. First person singular and plural subject needs a singular verb, like I like tea. Then we like tea. So singular and plural subject needs a singular verb. Now in the case of second person singular and plural, both you know, ये singular plural subject जो होता है इसका क्या होता है, you ही होता है. You, then you like tea. You like tea. Then it is the singular and plural both form. You जानते ही हो, तो क्या होगा, you like tea. यहाँ पे जो देख पा रहे हो, so singular and plural form of the subject needs singular verb. Understand? यहाँ पे भी singular verb होता है. अब आ जाते हैं थर्ड वाला में. थर्ड में क्या होता है, थर्ड का जो होता है लाइक सिंगुलर टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल टेक्स ए प्लूरल वर्ब. थर्ड वाला में क्या होता है, तो फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है देन द सब्जेक्ट, if the subject is in singular form then it takes a singular verb, like he takes tea. अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो वहां पे वर्ब जो होता है वो भी प्लूरल फॉर्म होता है. सो लाइक दे, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे टेक टी, दे टेक टी. दैट इज ऑलराइट. सो we have completed already the two rules. Now we are going to start the third one. Third one is uncountable noun. यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, पूरा डिटेल्स में हम बता रहे हैं यहाँ पे जितना रूल्स है, ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इशू आपका ना हो. कभी भी आप सेंटेंस लिखने जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा डिटेल्स में हम बता रहे हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हो अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन कौन वाला होता है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जो कि गिना नहीं जाता है, विच इज नॉट काउंटेबल, दैट इज अनकाउंटेबल, राइट, जो हम लोग गिन नहीं पाते. सो वाटर, सॉल्ट, ऑनेस्टी, सबको आप गिन पाओगे, कभी नहीं हो सकता है, इट इज नॉट काउंटेबल. सो इन द केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, when the subject is in uncountable noun, we have to use the singular form of verb. Like I have written there, when the subject is in uncountable noun, that time we have to use the singular form of verb, like honesty is the best policy. You can see here honesty is, ये जो is हो गया ये क्या है, singular form of verb. Honesty is the best policy. This is the example. Second one is the water is hot. So the water, क्या गिन सकते हो water को? Is it possible to count the water? It is not possible. So it is also the uncountable noun, and the subject is an uncountable noun. So you can see here here the is, that is the singular form of verb. So तीसरा वाला भी clear? If the subject is in singular form of noun, ठीक है,
अगर सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर फॉर्म में तो वर्ब क्या होगा, वर्ब भी होगा सिंगुलर फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में रहता है तो वर्ब भी होता है सिंगुलर फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल फॉर्म में तो वर्ब जो है वो भी होगा प्लूरल फॉर्म में। ओके, थोड़ा इधर उधर हो गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन, तो वहां पे क्या होगा, वर्ब जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन रहता है तो वर्ब जो होता है प्लूरल होता है। लाइक द मून is shining. The moon is shining. The moon is shining. All right. The moon here you can see it is the singular noun. It is also a singular noun. So we are using here is shining. So that is the singular form of verb. Like the sun is about to set. About to set. So the sun, that is also the singular noun. द सब्जेक्ट बोथ द मून एंड द सन क्या ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये वर्ब जो है वो भी किसमें हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में हुआ है। अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा हो रहता द बॉयज प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज कैन आर होगा ऑब्वियसली, देन द बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, द बॉयज आर प्लेइंग, तो ये द बॉयज क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इट इज ऑल्सो ए नाउन, तो ये क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में ये वर्ब होगा। सो ये चार वो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, बाकी जितना है वो आगे का वीडियो जो अपलोड किया जाएगा उसमें रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो देन टच द लाइक बटन। एंड फॉर टुडे, थैंक यू।